Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. In this class, I am going to solve the questions of exercise 8.2 subject mathematics class 11. In the last class, I have solved up to question number 5. In this class, I am going to start to solve the questions from question number 6. All questions are from NCERT textbook. Let's see the question number 6. This is question number 6. For what values of x the numbers minus 2 by 7, x minus 7 by 2 are in GP? So hope that there is no problem. This is the easy question of this exercise. Let's see the solution of this question. From question it is clear that a1 equal to minus 7 by 2, sorry, minus 2 by 7, a1 equal to minus 2 by 7, a2 equal to x, and a3 equal to minus 7 by 2. So we know that a2 by a1 equal to a3 by a2. This is the common ratio in a GP. After there is no problem to understand up to this step. Now putting the value of a2, a1 and a3. So here will be a2 equal to x, and we write down here divide minus 2 by 7, and a3 equal to minus 7 by 2 divide a2 equal to x. So the next step here will be x into minus 7 by 2 equal to minus 7 by 2 into 1 by x. After there is no problem to understand up to this step. Now we cancel out minus 7 by 2, 7 by 2. In the next step, here will be x square equal to 1. Therefore, x equal to 1 over root, and the square root of 1 equal to plus minus 1.
So in this question ask us for what value of x. So required value of x will be required values of x equal to plus minus 1. So this one will be the answer of this question. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. आइए इस क्वेश्चन को हिंदी भाषा में भी समझ लेते हैं सॉल्यूशन। प्रश्न से स्पष्ट है कि a1 इक्वल टू -2/7 है, a2 इक्वल टू x है और a3 इक्वल टू -7/2 है। हम लोग जानते हैं कि a2/a1 इक्वल टू a3/a2 इक्वल टू कॉमन रेशियो होता है। तो यहाँ a2 का वैल्यू पुटअप कर दिए x और बाई के लिए डिवाइड लगा दिए -2/7। ये आपका a1 का वैल्यू है बराबर -7/2 और फिर डिवाइड हो गया आपका x। एक सिंपल कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर देखिए x, और जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो -2/7 जो है आपका -7/2 हो जाएगा, इक्वल टू -7/2 और आपका x/1 जो है आपका 1/x हो जाएगा। ये आपका कैंसल आउट कर दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया और x का स्क्वायर रूट आपका +-1 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। होप दैट there is no problem to understand the solution of question number 6. Let's see the question number 7. Question number 7. Let's see the solution of this question. First of all, we see the question number 7. This is the question number 7. This is 0.15, 0.015, 0.0015 dot dot 20 terms. In this question, ask us find the sum to indicated number of terms in each of the geometric progression. Exercise 7 to 10. So hope that there is no problem to solve this question. So we write down here from question, it is clear that here a equal to 0.15 and here r will be second term by first term. So second term is here 0.015, 0.015 by first term is 0.15, then we get here 0.1. This one will be the common ratio. So we have the common ratio r, and in this question ask us what is the sum of 20th term. So here ask us what is the Sn. So Sn or S20 equal to what? So we know that, we recall the formula. Sn equal to A, here will be 1 minus r to the power n by
1 minus r, because here r is less than 1. So now putting the value of a, r and n. Now putting the values of n, a and r. So here will be s20 equal to the value of a is 0.15 minus 1 into the value of r is 0.1 to the power 20 by 1 minus 0.1. Hope that there is no problem to understand up to this step. So let's see what will be the next step. So we write down here s20 equal to 0.15 by 1 minus 0.1 equal to 0.9, and here will be 1 minus 0.1 to the power 20. So here will be 15 by 90. We cancelled out decimal, and here will be 1 minus 0.1 to the power 20. So 15 1 ja 50 and 15 6 ja 90. So here will be last step, 1 by 6, 1 minus 0.1 to the power 20. So this one will be the answer of this question. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. एक बार इसको हिंदी लैंग्वेज में भी समझ लीजिए. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन से ये पता चलता है कि फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न से स्पष्ट है कि ए का वैल्यू आपका 0.15 है और आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं A2 बाई A1. तो A2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.015 और A1 का वैल्यू आपका 0.15 है. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिल जाएगा. तो फिर आपका n का वैल्यू भी 20 दिया है और s20 का वैल्यू पूछा जा रहा है. तो ये डाटा को देखने से पता चलता है कि r का वैल्यू लेस देन आपका 1 है. तो Sn के फार्मूला को यहाँ रिकॉल कर लिया गया है. Sn इक्वल टू होता है a 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर. जब आपका सीक्वेंस सीरीज या प्रोग्रेशन जीपी में हो तो ये जीपी में ही दिया है. नाउ पुटिंग द वैल्यू पुटअप कर दिए हैं एन का, ए का और आर का. एन का वैल्यू पुटअप यहाँ किए तो S20 हो गया. ए का वैल्यू 0.15 है और 1 माइनस आर का वैल्यू 0.1 है और एन का वैल्यू 20 है बाय आपका 1 माइनस आर का वैल्यू 0.1 है. अब यहाँ से देख लीजिए इधर इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज हो यहाँ से समझ में आ ही गया होगा. एक सिंपल कैलकुलेशन कर दिया गया है और कैलकुलेशन करने के बाद देखिए आपका ये आंसर आ गया. तो hope that there is no problem to understand the solution of क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर के 7 के भी सॉल्यूशन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8.
लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। From question it is clear that from question it is clear that लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहाँ पर यही है आपका क्वेश्चन नंबर 8। रूट 7 है, फिर आपका रूट 21 है, फिर 3√7 है, एन टर्म का आपका सम पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट ए इक्वल टू रूट 7 एंड A2 इक्वल टू 21/रूट। और आपका यहाँ से r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो वी नो दैट r इक्वल टू A2/A1, तो A ही आपका A1 है, तो r इक्वल टू आपका हो जाएगा 21/√7। ये आपका √3 इंटू √7 चला जाएगा बाय आपका हो जाएगा √7 आपका कैंसल आउट हो रहा है, तो ये आपका बच गया √3। So the value of r is √3. Now we recall the formula. Sn equal to a, and here will be r to the power n minus 1 by r minus 1, because here r is greater than 1. The value of √3 is greater than 1. So now putting the value of a, the value of a is √7, and the value of r is √3 to the power n minus 1 by, here will be √3 minus 1. So now we rationalize the denominator. Therefore we multiplied numerator and denominator by √3 plus 1. So next step here will be √7 and whole start √3 to the power n minus 1 into √3 plus 1 by √3 minus 1 into √3 plus 1. So this is in the form of a minus b into a plus b. So the here next step will be √7 by, here will be a square of √3 equal to 3 and a square of 1 equal to 1. So 3 minus 1 equal to 2, and here will be √7, and we write down here √3 plus 1, and here √3 to the power n minus 1. So this one will be the answer. Of that there is no problem to understand the solution of this question. आइए इस प्रश्न को एक बार हिंदी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था आपका
प्रश्न से स्पष्ट है कि आपका ए का वैल्यू √7 है, ए2 का वैल्यू √21 है और या स्क्वायर √21 है। आर का वैल्यू हम लोगों को पता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। कैलकुलेशन के बाद देखिए आपका √3 आ गया आर का वैल्यू। एस एन का फार्मूला को रिकॉल किया गया है। जब आर ग्रेटर देन 1 होता है तो एस एन का फार्मूला ये हो जाता है। बाकी वैल्यू को यहाँ पुट अप करके इसको थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन कर दिया है। तो इधर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में कैलकुलेशन तो समझ में आ ही गया होगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। सभी के सभी आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं तो ये भी आपका जीपी में है। ए का वैल्यू 1 है या ए1 का वैल्यू 1 है, ए2 का वैल्यू -a है, ए3 का a² है, फिर ए4 का -aq है, अप टू आपका n टर्म है। इफ ए नॉट इक्वल टू -1 है। तो चलिए यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट लेट्स सी आपका यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 1 और ए1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। ए2 आपका हो जाएगा -a और यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो है एन टर्म पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो वी रिकॉल द फार्मूला फॉर कॉमन रेशियो। सो वी राइट डाउन हियर आर इक्वल टू ए2 बाय ए1। The value of a2 is -a by 1 equal to -a. After there is no problem to understand up to this step. Now we recall the formula sum of n term and written here a not equal to -1. So here r will be what? Not -1. So if we put here minus, then it become plus. So we recall the formula. We know that Sn Sn equal to a 1 minus r to the power n by 1 minus r. Here r is less than 1. So we put the value of here will be Sn equal to the value of a is 1. The value of a is 1. So we write down 1 and 1 minus the value of r is -a. We write down here minus a to the power n by 1 minus r here will be -a. So the next step here will be 1 and 1 minus
minus a to the power n by, here will be 1 minus minus plus a, and so here will be 1 minus a to the power n by 1 plus a. So this one will be the answer of this question. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए भी ये कलर्स उपयोगी हो. फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट A1 A इक्वल टू आपका 1 है, A2 इक्वल टू माइनस ए है. कॉमन रेशियो के फॉर्मूला को रिकॉल कर लिया गया, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किए तो माइनस ए आ गया. फिर से एस एन के फॉर्मूला को रिकॉल कर लिए, यहाँ आर का वैल्यू लेस देन 1 हो गया. सारा वैल्यू पुट अप कर दिए, एक सिंपल कैलकुलेशन कर दिए जो आप समझ जाएंगे, और ये आपका आंसर हो गया. तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. Let's solve the question number 10. Let's see the question number 10. So this is the question number 10. अब question number 10 यहाँ देख रहे होंगे. X cube x5 x7 dot 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 10 terms if x not equal to plus minus 1. So let's see the solution. From question it is clear that solution from question it is clear that. देख लीजिए क्वेश्चन से क्या क्लियर हो रहा है. आपका a इक्वल टू आपका एक्स क्यू है, और आपका सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू आपका x5 है. कॉमन रेशियो निकाल दीजिए. कॉमन रेशियो R इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x5 बाय एक्स की इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर. अभी यहाँ क्वेश्चन में दिया है एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होगा, प्लस माइनस 1 हो को छोड़ करके कुछ भी होगा. तो यहाँ पर जो भी है रिकॉल करेंगे तो आर का वैल्यू यहाँ पर जो भी होगा, सो वी राइट डाउन हियर, वी नो दैट एस एन इक्वल टू ए 1 minus r to the power n by 1 minus r. Now putting the value of a and r, now putting the values of a and r. So the value of a is x cube, therefore Sn equal to x cube, and here will be 1 minus x square to the power n by 1 minus x square. So the next step here will be equal to x cube, and here will be 1 minus x to the power
2n by 1 minus x square. So this one will be the answer. Of that, Hindi medium student also will be understand. तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी इसको समझ गए होंगे. Let's see the next question. The next question is question number 11. In this question, ask us evaluate sigma start from 1 to 11, 2 plus 3k. Let's see. Question number 11. Let's see the solution. From question, it is clear that सिग्मा लगाया. सिग्मा का यूज आपका सम का नोशन के लिए किया जाता है. आपका 1 to 11 जाएगा. इट मीन्स दैट 2 प्लस 3, फिर आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 to the power 1, फिर आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 to the power 2 प्लस डॉट 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 अप टू आपका 2 प्लस 3 to the power 11 हो जाएगा. After there is no problem to understand up to this step. आपका 2 to 11 times है, तो it means that here will be 2 into 11 प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 3, फिर आपका 3 to the power 1, सॉरी यहाँ इधर हो जाएगा 3 to the power 2, ये 1 था 2, 3 to the power 2 प्लस 3 to the power 3 प्लस आपका डॉट 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 it will be 3 to the power 11. So this part are in the GP. ये पार्ट आपका GP में, तो यहाँ we apply here GP formula. So here will be 22 plus the value of A, or recall the formula A are to the power n minus 1 by r minus 1 when r is greater than 1. Here the value of r will be 3 to the power 2 by 3 equal to 3. So which is greater than 1. Now putting the value of A and r and n, and the value of n will be 11, and the value of n will be 11, this one. So now putting the value of A, r and n. So here will be equal to 22 plus the value of A is 3, and the value of r is also 3. So 3 to the power 11 minus 1 by 3 minus 1. So the next step here will be 22 plus 3 by 3 minus 1 equal to 2, and 3 3 written 11 times, then we get
3 into 3, 3. So this is the, now we find out the multiplication. 3 3 is 9, 9, 9, and this is the 9, and this is the 9. So 9 9 5 times. So here will be, this one will be 81, this one will be 81, and this one will be 27. So we multiply 81 into 81, then we get here 181, and multiply by 8, then we get here 8, and 8 8 is a 64. Now we add this one, 1 8 8 16, at hand 1 5, and this is the 6. Now this one is multiplied by 27. So the multiplication will be 7, 7 6 ja 42, at hand 4, 7 5 ja 35, plus 4 39, at hand 3, 7 6 ja 42, plus 3 43, plus 3 47. वंस अगेन, 7 1 के 7, 7 1 42 के 2, हाथ में 4, 35 4 39 के 9, हाथ में 3, 7 1 42, और 3 आपका 45 होगा यहाँ पर। तो फिर 2 से चला जाएगा तो हो जाएगा 2, 14 12 2, हाथ में 1, 2 25 10, और 1 11 के 1, हाथ में 1, 14 12, और 1 13। कितना हो जाएगा 7 आपका, फिर 4 हो जाएगा, फिर 9 2 11 के 1, हाथ में 1 5 1 6, और 1 7, फिर 7, फिर 1। अब यहाँ पर लिख देते हैं इक्का दहा सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 17,71,047, 177147. So here will be equal to 22 plus 3 by 2 into, let's see, 1771, 1771 minus 1. So here will be 1771 for 6. Of that there is no problem to understand up to this step. So here, see, this is the minus 1. So this minus 1 subtracted here, then we get 6. So this one is divided by 2. So 2 8 ja 16, 2 8 ja 16, 2 5 ja 10, 2 7 ja 14, 2 3 ja 6. Now multiplied by 3, then we get here 22, 3 3 ja 9, 3 7 ja 21, at hand 2, 3 5 ja 15, plus 2 17, at hand 1, 3 8 ja 24, plus 1 25, at hand 2, the 3 8 ja 24, plus 2 26. सो 3 3 9, 3 7 21 के 1, हाथ में 2, 3 5 15, 2 17 7, हाथ में 1, 3 8 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 24 और 2 26। अब ऐड कर दीजिए इसको, तो
9 plus 2 11, at hand 1, 2 plus 2 equal to 4, 7, 5, 6, 2. This one will be the answer of this question. Of that, there is no problem to understand the solution of this question. Next question I will solve in the next class. Let's see. Next question are 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. So rest question I will solve in the next class. Rest questions I will solve in the next class. Till then, thanks to all of you. Thanks to all of you. Thank you very much to attend with me or to attend this class.